Hello studios. Today our topic is thoracic duct. It is a short note. Now we are starting from its contents. First of all, we will see the features of the thoracic duct, then extension of the thoracic duct, and then appearance of the thoracic duct, then what is the length of the thoracic duct, and we will see the curses and its relations of the thoracic duct. Then we will see the tributaries of the thoracic duct. Lastly, we will see the clinical anatomy. In the relation, there are the four relation with the thoracic duct. First relation with the diaphragm, second relation with the posterior mediastinum, third relation with the superior mediastinum, and the last fourth relation is with the neck. First, we are starting from the features. What is the feature of the thoracic duct? Thoracic duct is the largest lymphatic vessels in the body. थोरेसिक डक्ट हमारी बॉडी की एक लार्जेस्ट लिम्फेटिक वेसल्स है. वेसल्स यानी जिसमें आर्टरी और वेंस दोनों होती है. देन द एक्सटेंशन ऑफ द थोरेसिक डक्ट, फ्रॉम वेयर टू वेयर एक्सटेंड द थोरेसिक डक्ट, फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमिन टू द लोअर पार्ट ऑफ नेक and crossing the posterior and superior part of mediastinum. Seeing in diagram, from upper part of the abdomen to the crosses the neck. Here the neck crosses the neck, and then to the posterior and superior mediastinum. And then the appearance of the thoracic duct. Beaded appearance because of the presence of the many valve in its lumen. थोरेसिक डक्ट के ल्यूमेन में बहुत सारे वाल्व्स होते हैं, इसलिए इसका अपीयरेंस बीडेड यानी कोई मोती की माला होती है उसके जैसा है. जैसे यहाँ पर हम देख ही सकते हैं, यहाँ पर सब में बीडेड अपीयरेंस है थोरेसिक डक्ट का. दिस इज द लाइन ऑफ द थोरेसिक डक्ट. देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द थोरेसिक डक्ट? हियर इज द it is about the 45 semi long, and in inches it is 18 inches long. Then we are goes to the its curses. Thoracic duct begin as a continuous of upper end of the cisterna coli near the lower border of the 12th thoracic vertebra. In diagram, here is the thoracic duct. It starting from the 12th thoracic vertebra from the cisternae coli, and it enters into, this is the upper abdominal part below the diaphragm, and it enters the thorax through the aortic opening of the diaphragm, and it enter into the thorax. It entering into the thorax with the diaphragmatic surface at the aortic opening. Here is the aortic opening, and this is the thoracic duct. It ascend through posterior mediastinum from level of the 12th thoracic vertebra to the 5th thoracic vertebra. 12th thoracic vertebra से लेकर 5th thoracic vertebra तक वो posterior mediastinum में ascend होती है, ऊपर की तरफ चलती है. Where it crosses the right side to the left side, then it crosses right to the left, then वो right से left की तरफ जाती है. Then it crosses through the superior mediastinum along the left edge of the esophagus and reach the neck. And then we are discussing in the diagram. At from the posterior mediastinum, starting from the 12th thoracic vertebra to the thoracic 5th vertebra, it ascend at the posterior mediastinum. Then it's go to the right to the, this is the right side, and going to the left side with the along with the neck and to the superior mediastinum. Here is the superior mediastinum, and it goes to the neck. Next, in neck it arches laterally at the level of the transverse process of the 7th cervical vertebra. जैसे हमने बात की, वो नेक में राइट से लेफ्ट की तरफ जाके एक आर्च बनाती है. लेटरल साइड वो एक आर्च बनाती है एट द ट्रांसवर्स 7th cervical vertebra से. Finally, it descends in front of the first part of the left subclavian artery.
लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी में वो डिसेंड होती है, एंड बाय ओपनिंग इनटू द एंगल ऑफ द जंक्शन बिटवीन द लेफ्ट सबक्लेवियन एंड लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन. नाउ वो यहाँ से असेंड हुई थी और देन इट डिसेंड फ्रॉम द लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी. एंड एंड कहाँ पे होता है उसका? इट एंड्स इनटू द जंक्शन बिटवीन द लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी एंड द लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन at here. Now we are going to the relations of the thoracic duct. First of all, the relation with the diaphragm, because it's starting from the cisterniculi. At the anterior side of the thoracic duct, at the diaphragmatic surface, there is the diaphragm. We can see it. There is the diaphragm. And at the posterior surface, there is the vertebral column. Now here is the vertebral column at the posterior surface. And to the right, there is the azygous veins. And to the left, there is the aortic opening of the diaphragm. And at the posterior mediastinum, anteriorly, there is the diaphragm, esophagus, and right pleural recess. At the posterior mediastinum, it is situated in the near to the heart at posterior mediastinum. There is the diaphragm at anteriorly, esophagus also anteriorly, the right pleural recess. It's related with the right lung. And then the posteriorly, there is the vertebral column, right posterior intercostal arteries, terminal part of the azygous vein. Obviously, posterior side is the vertebral column with the right posterior intercostal arteries. It is from the posterior side, so the right posterior intercostal arteries. In the terminal part of the hemiazygous vein at the right side, we can see at the right side of the posterior mediastinum there is the azygous vein, and to the left side descending thoracic aorta, we can also see there is the descending thoracic aorta at the left side to the posterior mediastinum. And relation with the superior mediastinum, here in the diagram there is the superior mediastinum, anterior mediastinum, middle mediastinum, and there is the posterior mediastinum. We can see the superior mediastinum in this purple color, and anterior mediastinum with this blue color, and the middle mediastinum with this green color, and this light green color is the posterior mediastinum. In our superior mediastinum, this portion relation with the thoracic duct. Okay. Anteriorly, arch of aorta, obviously this is the superior mediastinum, so there is the arch of aorta, an origin of the left subclavian artery, and also there is the subclavian artery goes to the superior mediastinum to the neck in the left side, so it is the anterior relation. At the posterior relation, we can also see there is the vertebral column, at the right esophagus, and the left is the pleura because of the lungs. Now we are going to see the relation in the neck. This is the view of the left side of the neck. Anteriorly, there is the left common carotid artery. This is the left common carotid artery. Okay. Left vagus, left internal jugular vein. This is also left internal jugular vein and left vagus nerve. Then at the posteriorly, obviously all the posterior side have the vertebra, so there is a vertebral artery and the vertebral vein. At the left phrenic nerve, sympathetic trunk, and thoracocervical trunk. Here is the thoracocervical trunk between the thorax and cervical vertebra. Now next we are seeing the tributaries of the thoracic duct. What is the tributaries? Tributaries, thoracic duct receives lymph from the roughly both half of the body. thoracic duct हमारी बॉडी के दोनों हाफ में से लिम्फ सप्लाई होता है उसको, फ्रॉम द बिलो द डायाफ्राम के नीचे से, और द लेफ्ट हाफ अबव द डायाफ्राम, और डायाफ्राम के ऊपर से, बट ओनली द
mainly the left side, not only, just mainly the left side and partially to the right side. In the thorax region, it receives lymph from the posterior mediastinum nodes and the small intercostal node. And at the root of the neck, there is the efferent vessels of the neck forms the left jugular trunk. The root of the neck, we see that root of the neck, internal jugular vein. So it receives the lymph from the root of the neck with the left jugular trunk. From nodes of the axilla, axilla के nodes के पास forms the left subclavian trunk. Those trunk ends in the thoracic duct. हमने आगे ही देखा यहाँ पर दिस इज सबक्लेवियन वेन, सबक्लेवियन वेन के अंदर और लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन के जंक्शन पे हमारे थोरेसिक डक्ट एंड होती है, इसलिए वहाँ पर सबक्लेवियन ट्रंक के पास एंड्स द थोरेसिक डक्ट. हियर इज द ट्यूब्यूलरिस. Also the parts of the thoracic duct. There is the first intestinal lymph trunks, lumbar lymph trunks at the lower to the abdomen. At the above the abdomen there is the cisterna coli, descending thoracic lymph trunk, and this is the thoracic duct which passes upward, ascends with the left jugular lymph trunk and left subclavian lymph trunk at the lateral to the neck. Then lastly, the left bronchus mediastinum drains lymph from the left half of the thorax. यहाँ पर हम लेफ्ट ब्रोंको मीडियस्टिनल लिम्फ ट्रंक देख ही रहे हैं, वो लेफ्ट साइड ऑफ द थोरेक्स में से लिम्फ रिसीव करता है. ओके, और एंड्स इनटू द थोरेसिक डक्ट और ऑल्सो एंड्स द थोरेसिक डक्ट. थोरेसिक डक्ट में ही एंड होता है. Then the one fact is to the remember, thoracic duct drains lymph from the both some our regions of our body. First from the both lower limbs. Lower limbs में थे वो drains lymph करता है, drains the lymph from the lower limbs, abdominal cavity, our abdominal cavity, at the left side of the thorax, left upper limb, left side to the head and neck. This 2 is the below the diaphragm and this 3 is above the diaphragm to the left side. Okay, now next is the clinical anatomy. One condition is here, young lady during mid pregnancy, she has a complaint, rapid breathing and difficulty in swallowing, history of sore throat विथ जॉइंट पेन ड्यूरिंग चाइल्डहुड. ये सब इसकी कंप्लेंट्स है, क्लिनिकल एनाटॉमी है, ये एक कंडीशन है. इस डिसीज़ का नाम है रूमेटिक हार्ट. अब इस डिसीज़ में होता क्या है वो हमें देखना है. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ द हिस्ट्री ऑफ द सोर थ्रोट विद द जॉइंट पेन ड्यूरिंग चाइल्डहुड. उसकी चाइल्डहुड में सोर थ्रोट भी था और जॉइंट पेन भी था. इन रूमेटिक हार्ट अकर्स ड्यू टू द स्ट्रेप्टोकोकाइल इन्फेक्शन इन द थ्रोट. थ्रोट के अंदर स्ट्रेप्टोकोकाइल इन्फेक्शन हो इसलिए सोर ऑफ द थ्रोट होता है. दिस इज द नॉर्मल साइड ऑफ द आवर माउथ. इन द नॉर्मल साइड हियर इज द टॉन्सिल इज द नॉर्मल, बट इन द इन्फेक्शन स्ट्रेप्टोकोकाइल इन्फेक्शन देयर इज द white spots in our tonsils and it's go enlarge. So there is the toxin effect into the mitral valve and the kidney as well. mitral valve और किडनी दोनों में टॉक्सिन इफेक्ट होती है. इसकी वजह से वाइट स्पॉट होने की वजह से वहाँ से टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं, इसलिए उसमें से हमें किडनी और मिट्रल वाल्व दोनों में इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन या अफेक्ट होता है. देन इट्स लीडिंग टू, अब ये टॉक्सिन का इफेक्ट हमारे मिट्रल वाल्व और किडनी में हुआ, वो हमें क्या एबनॉर्मलिटीज हमारी शरीर में आती है. इट्स लीडिंग टू द लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट ड्यू टू इनकम्प्लीटिंग एम्प्टी इन द लेफ्ट वेंट्रिकल. इसकी वजह से लेफ्ट एट्रियल एनलार्ज हो जाता है. बिकॉज क्योंकि उस मिट्रल वाल्व में अफेक्ट है, इसलिए वो पूरी तरह से लेफ्ट वेंट्रिकल में एम्प्टी नहीं हो सकता. नाउ व्हाट इज़ द
causes एन एनलार्जमेंट, एट्रियल एनलार्जमेंट हुआ, इसलिए क्या क्या हुआ, एनलार्जमेंट ऑफ द एट्रियम, एट्रियम का पहले एनलार्जमेंट हो गया टॉक्सिन इफेक्ट की वजह से। इट प्रेसिस द इसोफेगस इज पास बिहाइंड द हार्ट एंड पेरिकार्डियम, इसोफेगस हमारे हार्ट और पेरिकार्डियम के स्लाइटली पीछे से जाता है, स्लाइटली मतलब स्लाइटली नियर से पीछे की साइड से जाता है, इसलिए इट प्रेसिस द इसोफेगस, इट कैन प्रेस द इसोफेगस। So patient have the complaint of the dysphagia and narrower of the esophagus. So patient have the complaints. It has the complaint of the dysphagia. Dysphagia का means होता है difficulty in the deglutition. Meaning of the deglutition is the related to the intake of the food. It's called the deglutition and abnormality in the deglutition is called the dysphagia and narrower of the esophagus, and because of the narrower of the esophagus it also goes to the dysphagia. In mitral stenosis, यहाँ पर हमने पीछे देखा मिट्रल वाल्व और किडनी में दोनों अफेक्ट होती है, इसलिए मिट्रल वाल्व में स्टेनोसिस होता है और मिट्रल वाल्व नॉर्मली इस तरह का होता है, हमारे हार्ट में मिट्रल वाल्व, then it goes to the stenosis, so it compresses, so blood cannot pass forcefully from the atrium to the ventricle, so the atrium has enlarged, so there is the presses the esophagus, and we discuss about the dysphagia. And then as enough blood is not reaching the lungs because of the compression of the mitral valve, we cannot reaching the blood to the lungs, therefore we can have the anoxia, difficulty in breathing called the anoxia in body leading to the rapid breathing, इसीलिए हम ज़्यादा सांस लेने लगते हैं, रैपिड ब्रीदिंग हो जाता है। Now here is our clinical anatomy is end. Thank you to you all